to present my views on the given topic through this in-house training. Thank you once again, ma'am. The topic, anger-free school. Here, the slide says, children are happy. Yes, first of all, anger-free school. School. We all are part, isn't it? So, in a school, the prominent roles, basically if I say, are played by two mature class and the children. It is the parents, the teachers, and the students. So here, if I take parents, do they have anger? Yes. Teacher? Yes. And of course children. Nowadays when we are dealing with 21st century children, they are very good at putting their points up, isn't it? And they make sure that unki baat mani jaye. But when we come together and when we are in an institute like school, do this anger is required? Just ask a question to yourself. क्या गुस्सा हर प्रॉब्लम का हल है? मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होता है कि we take out our anger and later we regret कि इसको ऐसे नहीं किसी और तरीके से भी हम हैंडल कर सकते थे, जो कि उस समय नहीं समझ में आता है, but later in a school we have different corners to have this anger. In a workplace, as a colleague, we stay in a staff room and in a classroom. So here in this session, it will be obviously a two-way where, because it is, as ma'am said, it is an emotion. Inborn emotion. ऐसा नहीं किसी ने ये चिप हमारे अंदर डाला है, नहीं. ये जब बच्चा पैदा होता है लोग कहते हैं it's a blank slate. It's a very common question because this was a question which was asked to us. कि do you agree with the statement that children are a blank cassette? बच्चे एक खाली किताब या खाली स्लेट है? Of course, at the time of birth. Yes, sir. I request sir to please speak it on the mic so that we have a discussion on this topic. My question to you is, I just need a maximum participation. See what happens when we talk on a topic, we come to know various points which actually we were not knowing, and it is a process, or it is, you can say it is one of the way of teaching learning. And as a teacher, we are always a learner. So the question was, do you think, or a statement says, children are blank cassette, या बच्चे एक plain किताब है? Do you agree with the sentence? If yes, please justify. If no, please justify. Tapan sir, you were telling something. Of course, and it's completely true. So you say, yes, children are plain cassette. Okay. Can you justify why are you telling this? Like, what makes you to speak that yes, children are a big blank cassette? Actually, whenever he or she comes, they don't know anything about this physical world. Okay. And they get to know everything from this environment, from this society, from the family or school or ongoing everything. So that's why we can say even about the language they speak. Yes. They learn it from the family. Yes, sir. We can't distinguish themselves as they are either Hindi speaking or Bengali speaking or something like that. Yes, sir. But actually they imitate. So truly agree that sir says they are blind cassette. And everything recorded is from the environment, from us, as a being a part of environment. Can I have one more answer, which those who are in favor that no, they are not blind cassette? Yes, Arvina wants to speak something. Good morning, everyone. Actually, the statement which you said
biologically, if we say, see, many things are that they are before the birth also they have been means they are inside from that also they have many things beyond. Yes. So totally we can't say that they are blank like a slate. Biologically, if we see that, and in our means जो भी हमने जो पुराण वगैरह पढ़े हैं उसमें भी आपने वो सुना होगा उसके बारे में क्या नाम है उनका अभिमन्यु. तो ही क्यों बोला गया था नहीं उन्होंने बहुत कुछ अपने माँ के मतलब जब वो पहले वोम में थे तो उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया. So because of this only, so we can't say that totally they are blank like a slate. Yes. So the two different statements. Yes, Roshan sir wants to add something. Yeah, actually, as the topic is today, your preschool, your wordings were that the students are blank cassette. So definitely I agree with you that they are really blank in the sense of that when they get appear in the schools. Before that time they are totally blank. Why there is a need of school to fill that blanks? Especially in their life, students come, enjoy their schoolings, and I think they stand with us for 12 years, 10 years with us. After that, as the wordings I had heard, like the students when they leave the schools, whatever they have, whatever I have filled them, we try to understand their qualities. Like suppose they are going to be something successful, like we are there for their success. Suppose they are going to do something wrong in their life, even we are there. So we can say that no, whatever we have filled in that cassette, they are representing in the future. So definitely when they come to the school, they are totally blank, and whatever we are giving, they are representing in their coming future. Very strong point, sir. But both the sentence, as research says, it is not me, it is the research who says both the sentences are correct, but in a different manner. What Tapan sir said and you said is absolutely correct. They are blank cassette. Because when they come to school, they are only 2.5. When they come to a nursery class. So at that time, we as a teacher, parents, whatever we record, they take it and they replicate. And the behavior shows. When they come to the 7th, when they are passed out in 12, they are 17. Almost a government banane ki shakti, they have the vote of right. So at that time, if they have done something good, we take the appreciation. Ye mera student tha. If they are doing wrong, who will take the responsibility? So there also, we are equal shareholders. In the positive, then the negative side also, somewhere I won't say completely. See, the research says the child is made with 50% of nature, which nature gives. It comes from the genes, and 50% from nurture, what we put it. Is it? So this is, I won't say, दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह करेक्ट है. Why? As you said, 2.5 साल की उम्र में हमारे पास आता है, and we keep on doing. But अगर हम कहें वो ब्लैंक कैसेट है, बिल्कुल नहीं है. अगर वो ब्लैंक कैसेट है, तो 2.5 साल से पहले जो वो बोलना भी नहीं सीखता है, तो वो अपना aggression दिखाता है. Most of us, our mothers, parents, you will come to know, he don't want to eat, he will not eat. He wants this, he wants that. So from there it is coming. It is somewhere the biological factor also plays an important role. So the child mind is basically 50% is nature with the biological genes what he gets from the parents. I mean the biology teacher can explain it better. The 23 chromosomes works there. And yes, the 50% is still blank, which we as a parent, as a teacher, as a society, as an environment, we put into that. So yes. So coming back to the school. School is a place, or we can say it is an area designed for learning, giving a space, giving a learning environment to the child. So where is the place of anger here in the school lines? Yes, as I told you, it is an emotion. We cannot get rid of it. Anger बिल्कुल आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकता. But we have to see what are we, to which section we are dealing with. We are dealing with the child. So it has to be molded in that way. और ये आज का thinking नहीं है. Very first school,
that Rabindranath Tagore has started, has named it as Shanti Niketan. He would have taken some other name, but the name itself speaks. It has to be Shanti, because the calm mind. आप अपने आप से अपने आप को ही इस पे अगर आप पुट अप करते हैं, गुस्से में किया हुआ सारा काम हमेशा सक्सेसफुल होता है? बिल्कुल नहीं। I am sure 50% तो वही खत्म हो जाता है जैसे आपको गुस्सा आ जाता है, isn't it? So the Shanti Niketan, Rabindranath Tagore says, the name itself says Shanti is very much important, especially when we are into this teaching learning process. The calm mind takes more or gives more. Nowadays, as we are dealing with 21st century children, where we are learning and doing. Pehle chalk and talk method tha, we like children mug up, write it with the exam, get the marks and the job. Do you think nowadays even 90% children are, they don't qualify some competitive exam just because they are mugging up. So now the century, this era speaks about experiments with the learning and taking it so that you are there in the global market. Nowadays, it is not only India, we are talking everything in terms of globe. And I really thank CBSE to give us this platform, because somewhere, even as a teacher, we code. ये हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, अभी क्यों है? Madam, it is a change, and every time we have to keep on us rushing. And CBSE is, even they are understanding it, so this platform, in-house training or CBSE training जो आपको दे रहे हैं, it is just because to cope up with the situation and so that we can come up successfully with that 40 minutes teaching what we are doing in the classroom. So here, as I said, we all are born with an emotion called anger. But yes, it's a good or bad that we have to decide, because सिक्के के दो पहलू, आप उसको पॉजिटिव वे में लेके उसको चैनलाइज कीजिए या नेगेटिव वे में लेके चीजें खराब कीजिए। अगर हम एंगर की बात करें, एंगर स्पीक्स, अगर एंगर बोला तो लोग टेक्स इन अ नेगेटिव मैनर, बट इफ आई टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, you have a dashing personality, so their anger is in a positive sense, isn't it? So whatever we do, anger is required. I won't say you can completely get rid of it, but whatever you do, you should not have a regret feeling about it. What I did was wrong, and most of the time it happens. In a teaching profession, especially 2 years back, when we were in Corona period, schools were the best examples for the adjustment. Us time mein, it was a big, question how the teaching will go on, because वहाँ पे हम सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके ऑनलाइन क्लासेस में I believe we all face this. बच्चों के पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, and the question was, जो भी questions वो पूछते थे, it was not the child बच्चे का question. बच्चे के साथ साथ दो क्वेश्चन पेरेंट्स के भी आते थे, दो अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा है बच्चा वहां से भी आता है। सो वो टाइम जब हमने कोप अप किया, सो दैट शोज द टीचर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडजस्टमेंट. सो व्हाई कांट वी, व्हाई डू वी हैव टू टेक look into our anger for a solution of everything. Here I will just tell you a small story about a sannyasi. They were in a family. One lady, वो हमेशा उसको गुस्सा आता था, हर छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, भी कोई भी रीजन हो, इस वजह से क्या होता है ना, you break your relationship with others. लोग आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं, अरे इसका तो काम नहीं चल, लड़ देखा। तो इस हालत में slowly she was ignored, cornered by the family. किसी भी चीज में उसको इन्वॉल्व नहीं करना, everything. So one day she wanted, एक साधु monk comes and she just shared, because कहते आप तो सारा समाधान जानते हो, just give me a समाधान for this problem. The problem, he says कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से मेरे रिश्तेदार मुझसे छूट रहे हैं, मेरे बच्चे मुझसे नहीं बात कर रहे हैं, मेरा family is going away. So he give me a solution. He says कोई बात नहीं, I have a medicine for it. तो वो अपने जेब में से एक बॉटल निकालते हैं, उसमें कुछ मंत्र चैंट करते हैं, and he says take this, but whenever you are angry, आपको उसी समय इसको खोल के पीना है.
जैसे ही आपको लगे कि अब आपको गुस्सा आ रहा है, जस्ट ओपन इट, वो जो 2-3 बूंद है मेडिसिन का उसको अपने जीभ पे डालिए, देखिए एंगर कैसे चला जाता है. एंड शी स्टार्ट्स डूइंग इट. आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ 10 days शी रियलाइज कि उसका गुस्सा सच में कम हो रहा है. एंड बिकॉज क्योंकि उसका गुस्सा कम हो रहा था, उसके फ्रेंड्स जो वो लूज कर रही थी गुस्से के कारण, जो which she was losing, the family, the friends, the children, they all were coming because they could also see the change in her. So suddenly after 15 days or 20 days again when that mom comes, she just offers all things and says, because of you I could get my family back. So very thank you. और वो जो आपने magical medicine मुझे जो दिया था chant करके, it really worked. Then the sadhu, he takes everything and he says, nothing was there dear, it was a plain water. What I gave you, कोई जादू वादू नहीं था, एक प्लेन वाटर है. लेकिन उस समय जब आपको गुस्सा आ रहा था, आपने क्या किया? उधर से ध्यान हटा के दवाई पे ध्यान लगाया कि दवा का बॉटल खोला, पिया और वहां से आपका टेम्पर डाउन हो गया. एंड स्लोली यू फोकस हो, जो आपको लड़ना था, चिड़चिड़ा करना था या चिल्लाना था, वहां से आपका फोकस हटा के आपने मेडिसिन पे अपना फोकस डाला. एंड देयर द एंगर रिलीजेस. So nothing is magical. It was all your who has done everything. So he quotes one example thing. Either you control your anger or anger will control you. So choice is yours. Two options. आप अपना anger control कीजिए, नहीं तो anger तो आपको control कर ही लेता है. So this was a very good message given by that sannyasi, which says कि कोई जादू कुछ नहीं है. It is you who can control. It is you who can, because we don't have, दूसरों पे changes लाना is very difficult. I want you to be this, 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 this. He will not take it. Why I should? But I can do this, this, this. Yes, I am the master of my own body, my own soul, my own programs. Then why not? So this is what the sannyasi says. So this, as I told you, from there there's actually the anger-free zone. इतने सालों से we have a Gurukul system, teacher-centered education came, then child-centered education came. From where this anger-free zone जो concept आया, how it came, where it came. So here is a circular. It is for in December 2019. There was a circular in CPSE. I'll just read out few points, important points, what exactly was mentioned here. Because here CPSE is a big organization. Here you have people from all spheres, the experts. They do a survey, they do a research, they do a case study, and after that they come to a conclusion. So they must have seen the rising cases where the teacher hits the child and the child is hospitalized. I am not speaking something which has not happened. News channels are dekh lijiye. And it is not, it is other way also. Recently something has happened. The child has hit teacher को, कुछ भी बोलना, hitting का भी cases आया है. So ये सब चीज जो है इनको reduce करने के लिए CBSE has taken this topic and very important topic to teach our teachers. It is not only teacher, it is the teacher, it is the parent, it is the student. Combined as a team, we have to come and we have to work on this topic so that we can really make the zone, the school, an anger-free zone where learning happens. Real learning is where the child learns it, and tomorrow when he becomes so and so, we can proudly say, I too have some share in his success. So as per the circular in this anger-free zone, everyone will try to manage his or her anger, whether it is a school educator, that is we all, the parents, school personnel and other stakeholders. It is school means it is not teacher or student. We have many people working here together, the office staff, they also have to do a public dealing, हमसे भी ज़्यादा, isn't it? So you have different kind of people coming into, and they speak all irrelevant. उनको सुनना, उनको समझाना. That also comes. So here you have office people, you have working, you have principal, you have the helping people. All of us together have to come together and make this zone as an anger-free zone. Okay? The best way to teach children the value of freedom from the anger is by setting an example ourselves.
We can tell people गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, but आप खुद example set कीजिए. So CBSE says the first change is you. आप अपने अंदर change लाइए, things will definitely change. Here also I quote some small incident which must have happened in सभी घरों में. There was a man. He come from the office. As Indian society is man-oriented, so I'll quote the man. So don't take it otherwise. It can be a woman's also. So it is like when they come and शाम को the wife says, "अरे बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया," and the things goes on, ये नहीं है, वो नहीं है, and then he takes out the frustration on the wife. Wife, he comes out in the kitchen because there she has to work, and the child comes in. He says, "Mother, Mama, I want this," but he don't get a solution. What he gets? That anger pass on. तुम चुप रहो, कुछ नहीं करते, तुम बस दिमाग काम करते, जाकर अपना होमवर्क करो. Now, child, अब वो क्या करेगा? उसके घर में एक छोटा सा pet है, maybe a kitten or a dog or something. He passes the anger to that kid. So you see there, the anger started with the father. और उसको वो कौन रहा है वो बेचारा pet. So जो anger का जो negative part है, it gets into negativity and more into it too. So this is what the CBSE says. If we really want to set an example, the first one, you should be that. Okay, so here he says, value of freedom from the anger is by setting example ourselves. We should be the first one to do. Making our school anger-free zone will help our students in developing effective skill in eradicating emotions like fear, disrespect, humiliation and hurt, which are the byproducts of anger. बच्चा आपसे डरता है, you don't have a space to come and speak to you. So it is inside, and when it is inside, you forget about students. You can put yourself, if you are not speaking it out, things will burst. So somewhere you also need a soldier to speak out. You also need a caller in a school if there is some problem. You need someone to speak. Maybe your colleague, maybe the principal, maybe the management. And then you seek help, and that is a very big relief, isn't it? अगर आपके साथ कुछ problem है, आपने उसको बाहर निकाला है, share किया है, then it is a relief. Otherwise वो grow होता नहीं जाता है. So actually this will help our student in developing mental activity and emotionally well-being. They shall go back home in a more changed and will want to return back to the school. Most of the students wait for the छुट्टी आएगा, छुट्टी आराम से सोएंगे. But अगर इस school को, classroom को, if we make a joyful learning, somewhere they will wait for the next sunrise, get up early in the morning, get ready, and they want to come back to the school. This is what CBSE insists, and then the incidents which are happening can be reduced. So before we start with my content, I'll just give you a worksheet which will help you to mark कहाँ है आप, वो जो एंगोमीटर स्केल है, where are you? So this is 5 scale rating. आप एक दूसरे से नहीं पूछिएगा because ये आपका खुद का है, आपके अपने इमोशन से अपना एंगल है, और फिर लास्ट में कैलकुलेट कीजिए आप कहाँ है.
Teachers, I request all of you to put your name, okay, so that at the end of the worksheet will come to know who is more angry men of CPS. Such is your evaluation. Yes, sir. Calculate कीजिए सर. Teachers, you have 20 questions, पीछे भी है, okay? And at the end, you are calculating out of 100 कितने मिले? A plus A, B, C. Okay? No correction required. And yes, I told you, be truthful to yourself. It is something you are going to test yourself, which is going to reflect your personality in concern with anger.
I'm not in a comfort zone at all. Yes, teacher, is your feeling? How others can know your feeling? It's really going to be nice to hear about it. Teachers, it is individual activity that receives converting into a group. Yes, yes, teachers. I could not find the names. So here it was a worksheet to judge yourself. I believe it was relevant, and you can mark yourself. Yes, it really happens. I could understand myself today. Yes. Yes. Thank you. Really. Thank you, ma'am. So yeah, this worksheet was basically designed to test because गुस्सा आना अलग चीज है, कैसे आता है, कितनी बार आता है, क्यों आता है, what are the trigger points? Here it is written. So can we find the angry man or a woman from CPS replacing Amitabh Bachchan from Bollywood? Can I guess? Yes. That you will find that one is very astonishing. I know. It's just next to impossible, as per my thinking. But here I can, from this survey, or I can find out, most of our teachers are between 30 to 50 ka tag. Is it true? So, very good. The first thing which describes a teacher is a tolerance, power to tolerate the things. So I am really happy because my sheet is not here. Yes, most of we are into the category between 30 to 50. It's a good sign, and we can congratulate ourselves if we are teachers in this anger management section. Yes, so like Rashmi ma'am, 59 scored. So here the question is, I
happy with little or no provocation. Yes? US says, कुछ भी नहीं होता तो भी मुझे गुस्सा आ जाता है. She said yes. I don't know how it could be it could. Can you say ma'am क्यों गुस्सा आता है आपको? Yes, ma'am. बस आ जाता है. ये सेशन जो है आपका, ये जो आ जाता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए. गुस्सा सभी को आ जाता है, लेकिन क्यों आ जाता है ये हमें पता नहीं होता. बट बहुत टाइम ऐसा होता है, with that confusion we get angry. That is what I said, and later we regret कि क्यों किया हमने, क्यों आया. हम ही ये क्वेश्चन का आंसर नहीं सॉल्व कर पाते. It is not only in the school, in our personal relationship also. When we have a fight and later आधे घंटे के बाद we realize कि what we did was not correct. It could, उसको हम अलग तरीके से भी मैनेज कर सकते थे, isn't it? Aarti ma'am, you taking questions? No. We have Aarti ma'am. She has judged, and but we have to say कि she was truth. बाकी थोड़ा बहुत इधर और किया, लेकिन अगर इनका 80% स्कोर है, इसका मतलब वो काफी ट्रूथफुल है अपने आप से. उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सही, जो उनका इनर कॉन्शियस ने बोला जो है एक्चुअली, उसको जज करते हुए she has again leaded with 80% of score. Yes, ma'am. I would like to know you the trigger points of your anger, so that we all are aware next time. I think we can say that so maybe they many of can take the advantages of that. So what should I say? But I don't. I'm also worried about all those things because it happens with me. I don't know, like small things, like if somebody is not listening, so that also. And what happens sometimes that you said that in a relation or in friends or family, or if sometimes they said that to be calm, and if I am saying that let me speak, and again from that side it said calm down, calm down. So first let me speak, and that time my means anger goes more high because they are not letting me to speak. So that is also the thing, that if somebody wants to explain you, or if somebody wants to tell you something, so you must listen. So I think these all things are that. Okay, ma'am. Like I can, as I told you, anger free does not mean getting rid of. आप एंगर खत्म करके साधु संत बन जाइए, साधुओं को भी कभी गुस्सा आता है. It is next to impossible. But yes, here it is a management. This workshop is to manage, not getting rid of. किसको खत्म करके, if you don't have anger, as I told you in the later slides we'll discuss about, there is a positive side also anger. Anger do have a positive side. It is up to us, as I told you. You control your anger, otherwise anger controls you. Sometimes the position which we are holding as a teacher in the classroom, if we make people shout, हाँ ठीक है, हमने anger नहीं होना, you keep on doing, will not work. Sometimes you have been given some responsibility and you want the things to be done, and if it is not done, zahir si baat hai, the next step, anger. So sometimes the chair also demands anger, but that anger is again in a positive sense. It is not a personal, but yes, something we have focused on and we want to achieve it together. And as an in charges, as a principal, as a teacher in the classroom, we all have some responsibility, and just to achieve that, anger is again an important thing. Okay, thank you, ma'am. So coming to the next slide. So here in today's anger management, we are going to deal with the topics here. First, definition. Again, positive and negative effects of anger. Then you have causes. The role of a teacher, as it is, we are dealing here with a school. So here the teacher's role also becomes very important. The second, the role of the parent. As I told you, this freedom from the anger cannot be taken alone as a teacher. We have to come as a unit with the parents
as a teacher, as a student. And because I was, once I just want to tell you, कहीं पे I was going through an interview, जो TV पे debate वगैरह चल रहा था, on the same topic. The one child of some school, he put a question to a counselor. The question says, he says, yes, I am angry, I am very easily triggered, मेरे friends मुझे तंग करते हैं, मैं गुस्सा होता हूँ, वो अलग बात है, मेरे parents भी तो गुस्सा होते हैं, why don't they need a counselor? आप मुझे अगर कह रहे बच्चा, ये बच्चे का राइट है, उन्होंने ये कहा अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे आप काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं, so why not a parents needs a counseling? They too need a counseling to make a घर का जो environment है, to make it healthy, so that child also feel comfortable. Part time what happened कि बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, he won't come and speak to you because आपका डर. As a parent, as a teacher, हमने उसको space ही नहीं दिया कि वो आके हमसे बात करे. And उस situation में चीजें खराब होती हैं. When you give a space to a child to come and speak to you, maybe वहीं पे हम solution निकाल लें. So this is again a question of a child to the society, to the school, to the parents, कि why are not a counselor for a parents? Parents find part times, maybe some other their personal issues, but that create a wrong or not a healthy environment for a child to survive in. Then we are going to talk about the role of parents, the role of students, and then of course last but not the least, the mantras, how to come over this anger. Yes, it's very important. So conclusion से पहले उसका जो है why it happens, what is it exactly this something. Yes. Now coming to the definition, what is anger? It was already discussed. It is a born emotion. ये किसी ने हमारे अंदर डाला नहीं है. पैदा होते साथ ही ये हमारे पास हमारे पेरेंट्स से इनहर्ट होता है. इसीलिए बोला कि बच्चा इमोशंस के साथ पैदा होता है. उसको ये पता होता है you cannot forcefully make him eat which he don't like. Parents want that children should eat leaves because they are good for health, because we know it. But do you find children taking it very easily and smoothly, having eaten it, even though it is very good for the health, because you know it? No. They too show the emotions. And what happens? What is actually anger? So anger is a born emotion towards someone or something you feel has done something wrong to you, has not worked according to you. आपने एक रूल सेटअप किया है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, और जहां आप काम करते हैं, उस रूल से अगर कोई नहीं चल रहा है, it is not coming to up to the mark, then you feel angry. Okay? So this anger can be of 3 ways. अगर उसको categorize किया जाए तो anger we categorize into 3 ways. That is passive anger, aggressive anger, and assertive anger. So what is a passive anger? Passive anger means your negativity comes out. आपने जो सोच लिया वही सही होगा. Other person is speaking all nonsense and what I am speaking is only correct. When you have this attitude towards anger, when you are not ready to give a second thought to the reason of your anger, then you pull, or you can say you push yourself towards the passive anger. Next is the aggressive anger. When with the talking, the action comes, it calls aggression. Anger जो है आपकी बातों के साथ आपकी action में भी आ जाए, that is aggression. Then is assertive anger. Anger है, this is what we have to work on. Anger तो रहेगा ही, it is inborn, but how to do it is in a controlled way. That later when we read about the mantras, the steps to be followed, there will come on this topic, that is anger in a controlled way. That is, sir, are you angry? Okay. So anger in a controlled way is a assertive anger. Yes. As we says, every coin have a 2 sides. You look it from your side, I take it from my side. So here, anger free. Something is missing in anger. Okay, G is
Yes, sir. G is missing. G is gratitude, feeling of gratitude. Okay? Okay, sir. So here, the definition at A, anger, attitude of gratitude. So here, attitude towards the gratitude means thankfulness. Whatever you get, whoever have given you, maybe your parents, maybe your teachers, maybe your friends, maybe your brother, sister, your siblings, maybe your husband, maybe your wife, till you have the feeling of gratitude, anger आना नहीं है. So I request Anuj sir. Sir was telling yesterday a very good thing about this, so I chose him. So he will be speaking on this topic, attitude to gratitude, that is pratakta, thankfulness. Yes, sir. एटीट्यूड का मतलब रवैया कर सकते हैं या भाग जमाना। जब कहीं भी हम कुछ काम करते हैं तो काम सहानुभूतिपूर्वक होनी चाहिए। सहानुभूति से जितना कार्य कुशलता से हो सकता है उतने एटीट्यूड से नहीं हो सकता। हम सहानुभूतिपूर्वक कार्य कराएं तो दूसरे का मिजाज भी अच्छा होता है। सुबह में जब कोई भी व्यक्ति कहीं किसी स्कूल, किसी विद्यालय में या कोई भी संस्थान में जब कार्य करने के लिए जाते हैं तो एक बिल्कुल घर से खुशमिजाज लेकर जाते हैं कि आज हम जाकर के अमुक तरीके से इसका कार्य करेंगे, लेकिन किसी व्यवधानवश उन्हें आते आते ही अगर किसी भी प्रकार की कोई एटीट्यूड दे दिया जाता है, उन्हें क्रोधित कर दिया जाता है, तो वहां उनकी मिजाज खराब हो जाती है और वो कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उनका कर्तव्य है। हम समाज से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो समाज में विभिन्न प्रकार के आभार व्यक्त भी हम करते हैं, किसी का सुख हो या दुख हो। सुख में जाते हैं, मान लीजिए आपका ही कोई बच्चा अभी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, डिक्टेंशन मार्क्स ले आए और उनके पिताजी रास्ते में मिल गए, आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चा आया बैठ को अपने आशीर्वाद दिया, तो आभार जो प्रकट किए, एक गार्जियंस के सामने उस बच्चे का हौसला आपने जो जाया, उस बच्चे का एक लक्ष्य के लिए आपने जो प्रेरित किया, तो बच्चा वास्तविक तरीके से वो लक्ष्य पर हासिल कर देगा, अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया। Thankfulness is very important in your life. As sir said, we are here, we deal with every years. Hundreds of children come in a set and they are pass out. But after 10 years, if he finds out, and this happens, if he's somewhere in the society, some so-and-so, or he's working as so-and-so, and he recognizes you in this crowd and says, oh ma'am, you were there in that school. And he comes and touches your feet and he shares that thankfulness. Because you were there, I could, some incident would have happened, isn't it? And मेरे ख्याल से ये सभी के साथ हुआ है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, और कहीं अगर गलती से आपसे मिलते हैं और आपको ये बोलते हैं कि मैम that day you told me that thing and that made my life change. That is what the best earning you have earned from this profession, isn't it? That is why we call teaching as a noble profession. Yes, we don't get everything, but we get a lot of things, isn't it? So this is what the first word says, attitude or gratitude. Second is M, that is no to bad mood. No to bad mood, जैसे first सुबह सुबह आप उठे और गुस्सा, and then you come start working. Please tell me very truly, वो दिन आपका कोई काम अच्छा होता है क्या? No.
So Tapan sir would like to speak on this. Because I think he's the most jovial person at CPS. Thank you, ma'am. So, I will give you the advice to everyone. Never say like that as ma'am told, that early in the morning after getting up, your mood should be forget everything at night. And whenever you get up with a fresh, happy mood, so that the day goes very nicely according to you. Certainly, ma'am, if we start the morning with no bad mood, irritating, whatever you will get the whole day, you will be in the negative mood. If someone is giving you the suggestion in a well manner, then also it will react to you. Very true, sir. True, sir. That is the reason every day your morning should be very nice with a smile and happiness. Thank you. Okay. Very good, sir. So the first thing, early in the morning, you have to say no. No to the bad mood. Next come empathy. What is this empathy basically? Empathy is nothing but you are feeling others' emotion also. If somebody is angry, कई बार होता है बच्चों के साथ हम उलझ जाते हैं या पेरेंट्स के साथ. You just put yourself in their shoes and find the pain. Why they are doing so? Then of आपका जो anger meter है वो अपने आप नीचे. Yes, मैंने बोला anger is not, you are not getting rid of it. But these are few methods which will really help you out to cool down. Empathy means you should be able or you should be in a condition to understand the problem of that person, why he is reacting in that way. उस तरह से उनका बिहेवियर क्यों है? बच्चा अगर आपकी क्लास में एक बहुत ही रूड वे में बात कर रहा है या कुछ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा. And as a teacher, as a counselor, as a mentor, it is our duty again to make that child comfortable, to know why he is acting like that. What is the reason behind? Maybe something has happened at home. Maybe something is not going very smoothly with the child, with his own condition. Maybe something is triggering her mind. और वो चीज जब तक आप बाहर नहीं निकालिएगा, तब तक you know the news which is running. Recently something has happened in Delhi. The student stabbed the teacher in the classroom itself. You just see the trigger point, वो कहाँ तक गया, उसका state of mind state क्या हुआ कि उसने ये कदम उठाया. मतलब वहां पर वो कॉर्नर नहीं था जहां वो जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग को बता सके कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं यहाँ परेशान हूँ. तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज रिलेंस, मतलब लचीलापन. यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. यू कैन बी वेरी रिच. इफ दिस इज व्हाट आई सेड, यू हैव टू डू इट. You have to take suggestions from others. Then next is free from negative thoughts, reinforcing positivity, eradicating criticism, and empowering oneself. This is what we call you can say the definition, or you can say the full form of anger free. Next. Now it comes anger management. Anger management does not involve getting rid of all anger, but using anger to enhance your life. We can look at the purpose of the anger for both positive and negative side. अब आपको anger का positive and negative effect दोनों ही पता चलेगा. Yes. The positive aspects are you have increased energy, are able to communicate your feeling, able to problem solve, and can take charge of the situations. Anger जरूरी है. क्लास में अगर आप anger दिखाते हैं, इसको positive charge में you can make children do the work. Tomorrow is the last day. If you don't do it, you are going to get this, and you will find not 100%, at least 80% will come with that. So this is what the positive side of the anger is. The negative sides. The negative aspect of the anger are that you can have disturbance, you disturb yourself, you stop yourself thinking, you hammer your creativity. ये सारी चीजें is a negative side of your anger. Okay? Here are a few more. The negative effects of anger. It is
We can say you go into fight, you abuse, your life communication loses. So here a very good quote by Gautam Buddha. He explains anger as anger is like a burning coal. कोयला होता है ना, it is like a burning coal and you are holding it in your hand and you want to throw it on the others. दूसरे पे फेंक दिया आप, गुस्सा खत्म नहीं, पहले तो आपने अपने आप को जलाया. That coal is going to burn yourself. पहले आपने अपने आप को जलाया. First, with that anger, you have put a harm to yourself. Then you are throwing it out. So this is what Gautam Buddha describes anger at. First, you are hammering or you are disturbing yourself, and then you are throwing that coal to other. So this shows गुस्सा पहला नुकसान आपका करता है, उसके बाद जिसके ऊपर आप दिखा रहे हैं. तो कुछ नहीं होके सेल्फिश हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, पहले अपने आप को ही नुकसान ना पहुंचाइए. तो वहीं से वो जो चेन है it will be. So positive side is yes, it makes you talk, it makes you or it gives you a strength to find a solution. Communication बहुत strong हो जाता है. It helps you to find out the ways to work. So ये आपका पॉजिटिव, मैंने आज बोला एंगर खत्म नहीं किया जा सकता है, बट उसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया जा सकता है. तो ये एंगर के प्लस पॉइंट्स है कि इसके जरिए आप लोगों को बात कर सकते हैं. यू कैन टेक आउट व्हाट इज देयर एग्जैक्टली इनसाइड, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक द थिंग द positive, or you can say positive sides of the anger. You can find a solution out of it. So next, coming to the causes of anger. You can see a man standing here and it is full of, the posture itself means he is not happy, somewhere angry. So here are many reasons for your anger. So it can be hopelessness, जहाँ आपको उम्मीद ही नहीं है, अरे कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला. जब ये स्टेटस आता है वो गुस्सा आएगा, इतना मैं करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, ये काम दिया, ये भी करके दिखाया, ये काम करके दिखाया, फिर भी कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता. सो देयर इज वी कॉल इट एज होप. नेक्स्ट इज फियर. व्हेन यू क्रिएट अ एनवायरनमेंट ऑफ फियर, डर, उसमें भी गुस्सा बाहर आता है. नेक्स्ट इज शेम. समटाइम्स यू डोंट अचीव एनीथिंग एंड यू फील दैट रिग्रेट फीलिंग कि why I did this, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ऐसा नहीं होता. So जो regret feeling, the shame जो है, that is also responsible for your anger. Next, humiliation. This generally happens with a student. In open, they will take everything when you take them in a corner and says, देखो ऐसा नहीं, this is not the way to behave in the class. If you have a problem, you come to me, speak. Generally, our seniors tell, not only in the school, as a working this thing also, your seniors always warn you. अगर वही आपको अगर सबके सामने बोलते फिर you feel humiliated. But if the correct answer तरीका है when they call you in the corner say, see what you were doing was not correct. It can be done this way and there you don't feel humiliated and then the positive things comes out. But अगर आप publicly ऐसा करेंगे, humiliate करेंगे, that can be a big reason of anger. It goes with the children also. If you find some disturbing agent in your class, especially with the higher children, 6 to 10 and 12, especially 11 and 12, if you humiliate them in the class, because they are in that age, even though if you are speaking correct, they will not take it. आपने क्लास में ऐसा क्यों बोला? लेकिन अगर उसको अगर हम कॉर्नर करें, says you please come and meet me in the staff room after this class, and then if you explain what they actually were doing in the class was not correct. This can be done in this way. This is how you should behave. And if you don't do it this is what you are going to face. So I think there they take it positively. But if publicly you do it, you can't stop them. Because they are in that age, growing age. Next is rejections. Sometimes rejection, see again as I told you, everything can be taken at both the sides. Rejections, people take it, how could he reject me? And the anger, that seed of that anger is so there. But if you take it as a positive side, what was there not in me that people rejected me and start working on it, it will benefit you in the long term. This is what things has to be taken in a positive way. Next is stress. Of course, a big
or I can say a big bomb on all working class. Not only here, every working, let it be any sector. If you are working, this stress, you have some time target, ये करना है, within this you have to do it, and then you are not able to do it, and this is how the stress is created. And loneliness, of course, when you are aggressive, you are ignored, and you are alone, that you don't have anyone speaking about it. You don't have anyone to whom you can speak, to whom you can go and tell this is happening with me. And this is again one more big reason of your anger. Then is jealous. Of course, if somebody is doing good, how could he? Why can't I? If you come to this point, why can't I? Then it is a positive side. Then you start working on it. But how can he? सिर्फ ये क्वेश्चन यहीं तक रह जाता है, तो वहां से आपका जेलस फीलिंग जो आता है वो धीरे धीरे एंगर का रूप लेता है. नेक्स्ट इज इनजस्टिस. वेरी इंपॉर्टेंट. कंफ्यूजन. व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट? कई बार जो झगड़े होते हैं या लड़ाई होती है, एंगर होता है, उसमें आप खुद ही कंफ्यूज होते हैं कई बार कि हम क्या चाह रहे थे और हमने क्या कर दिया. एंड व्हाई वी वर फाइटिंग, व्हाई वी वर डिस्कसिंग. समटाइम वी हैव दिस टॉपिक, लेकिन जब वी आर इनटू एंगर, वो कहीं से कहीं चला जाता है, एंड देयर इज अ कंफ्यूजन. एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी कम टू नो it was not happening that way what we are fighting for. So this confusion is a very important thing. So इसीलिए कहा जाता है before you speak always judge. पहले बोलने से पहले, एक्शन से पहले, you should know what are you doing, why are you doing, and what consequences you are going to have. Either जिसके लिए आप झगड़ा कर रहे हैं वो चीज आपको हासिल हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी. So you should always find the best way out of the waste. Best of इसमें से जो भी है, सारे रीजंस है, वी नो दैट एंगर के, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको हैम्पर करें, वो चीज बहुत जरूरी है. सो आई विल हियर आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल वीडियो. इट्स नॉट अ स्मॉल वीडियो, बेसिकली इट्स अ न्यूज का एक डिबेट का क्लिप है, where you have our president CBSE Anurag Tripathi, a principal and a doctor, in a very relevant way, where you will come to know what exactly is happening, why children are angry, and what is our role, why it is so important nowadays to talk on this topic. It's a little lengthy, but I find it is very relevant. नमस्कार, देशांतर में आपका स्वागत है. आपके साथ घनश्याम उपाध्याय. आज देश देशांतर में बात करेंगे स्कूल, बच्चे और क्रोध प्रबंधन की. असल में इस विषय पर बात करने की वजह है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. इसने सभी स्कूलों को अपने क्रोध मुक्त जोन शुरू करने के लिए कहा है, जहां शिक्षक, अभिभावक और प्रशासनिक स्टाफ सभी अपने क्रोध को नियंत्रण करने की कोशिश कर बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे, उदाहरण पेश करेंगे और उन्हें क्रोध से आजादी का महत्व समझाएंगे. बोर्ड ने कहा है कि ये छात्रों को मानसिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक तौर पर स्वस्थ रहने में मदद करेगा. साथ ही वो घर पे ऊर्जा और प्रसन्नता के साथ वापस लौटेंगे और अगले दिन स्कूल आने के लिए इच्छुक भी होंगे. सीबीएसई ने सभी स्कूलों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि इसे जॉयफुल एजुकेशन एंड होलिस्टिक फिटनेस की पहल के तहत शुरू किया गया है. सीबीएसई का कहना है कि क्रोध मुक्त जोन में सभी गुस्से पर नियंत्रण का प्रयास करें, चाहे शिक्षक हो, अभिभावक हो या स्कूल कर्मी हो. बोर्ड का यह मानना है कि स्कूलों को क्रोध मुक्त जोन बनाने से छात्रों में स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी. तो आज इस क्रोध मुक्त जोन को समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि बच्चों को गुस्से से दूर रखा जाना कितना जरूरी है. मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है. परिचय में आपका करा दूं, मेरे साथ अनुराग त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, सचिव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. स्वागत आपका. ज्योति गुप्ता जुड़ रही है, प्राचार्य प्रधानाचार्य है, दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से. मैम स्वागत आपका. डॉक्टर जितेंद्र नागपाल वो चिकित्सक हैं, चर्चा का हिस्सा है. डॉक्टर स्वागत आपका. सबसे पहले अनुराग जी, शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे. मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा हालात को देखते हुए कितनी महत्वपूर्ण और जरूरी थी कोशिश जिसे शुरू किया जा रहा है? जी, बेसिकली क्रोध और गुस्सा ये एक इमोशन है जो अचानक किसी मोमेंट आता है और उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं.
क्रोध एक ऐसा इमोशन है जो समटाइम हंगर है या नर्वसनेस है, स्ट्रेस में है, बीमार है। कहना चाहते हैं कि ये बेसिकली पर्सनल लेवल का इमोशन है और इसका रीजन व्यक्तिगत होता है। क्रोध जब स्कूल में बच्चों के साथ किया जाता है, क्रोध जब पेरेंट्स बच्चों के साथ करते हैं, क्रोध जब हम सामाजिक लोगों के साथ करते हैं तो उससे बहुत सारी नेगेटिविटी फैलती है। बेसिकली लोगों की कैपेसिटी उससे कम होती है, लोग डिमोरलाइज होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, जो कार्य करने की उनकी प्रगति है उसका भी नुकसान होता है। और व्यक्तिगत नुकसान तो होता ही है कि आदमी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता है, बीमार होता है, उसकी खुद की एफिशिएंसी खराब होती है। स्कूलों को क्रोध मुक्त जोन बनाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने भी सर्कुलर निकाला है और हमने रिक्वेस्ट की है प्रिंसिपल से, टीचर से और बच्चों से कि क्रोध मुक्त जोन किस तरीके से अपने स्कूलों को बनाएं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हम एक जॉयफुल लर्निंग की तरफ बढ़ सकें। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस सर्कुलर के द्वारा हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट, हमारे टीचर एक हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, जॉयफुल लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। और जब वातावरण क्रोध मुक्त होगा तो बच्चा सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होगा और सोसाइटी में इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो सीबीएसई के एडवाइजरी लेकिन इसे स्कूल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे समझने की कोशिश। ज्योति जी, एंगर फ्री जोन एक कॉन्सेप्ट स्कूल के लिहाज से थोड़ा समझाइए, आखिर इसके जरिए आप स्कूल में क्या क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि बच्चे जिन घरों से आते हैं वहाँ पे पेरेंट्स भी, अभिभावक भी इसको प्रैक्टिस करें और बच्चों के साथ गुस्सा नहीं करें। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो पढ़ने के लिए आते हैं और इंजॉय करने के लिए आते हैं, जैसे बोलते हैं जॉयफुल लर्निंग के लिए आते हैं। तो अगर टीचर बच्चों के साथ गुस्सा करती है तो बच्चे ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, अपने पीयर्स के सामने ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। तो ऐसे में अगर टीचर को गुस्सा नहीं आएगा तो उसकी अपनी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी और बच्चे जो है वो एक खुशी के माहौल में पढ़ेंगे। ऐसे ही जब पेरेंट्स आते हैं तो वो भी स्कूल में नाराज आते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर वो नाराज नहीं आएंगे और अपनी आके अपनी बात रखेंगे तो उससे एक सॉल्यूशन निकल के आएगा और स्कूल मैनेजमेंट है या टीचर्स हैं या बच्चे हैं एक खुशनुमा माहौल में सारा काम करेंगे। उसके अलावा सीबीएसई ने और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू करी हैं, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम शुरू किया है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड करिकुलम शुरू किया है। तो बच्चों को एक एंगेज करने का जो है वो एक सिलसिला शुरू किया है कि सिर्फ टेबल और चेयर पे बैठ के वो पढ़ेंगे नहीं, पर वो एक आर्ट के जरिए, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है या क्रिएटिव आर्ट्स है या विजुअल आर्ट है, वो बच्चे को जैसे ही आप एंगेज कर लेंगे तो बच्चे आपस में भी नहीं झगड़ा करेंगे। बच्चे कई दफा क्या होता है सिर्फ एक दूसरे के साथ मीन बिहेवियर शो करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं या एक दूसरे की बात टॉलरेट नहीं करते या सहते नहीं हैं। पर जब सारे बच्चे किसी ना किसी खेल में या किसी ना किसी फॉर्म ऑफ आर्ट में एंगेज हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ भी गुस्सा नहीं करेंगे। उससे क्या रहेगा कि बच्चे मतलब अपनी क्रिएटिविटी के जरिए ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो एक नेगेटिव मतलब अगर आप एक नेगेटिव इमोशन किसी को देते हैं तो आप नेगेटिविटी ही वापस पाते हैं, पर आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सारा का सारा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। डॉक्टर नागपाल को चर्चा पूछते हैं। डॉक्टर नागपाल, असल में वो बच्चे जो हमारे स्ट्रेस बस्टर हैं, जिनको देखकर हम दुनिया भर की थकान दूर हो जाती है, तनाव खत्म हो जाता है, जब वो बच्चे गुस्से के कटघरे में हमें नजर आते हैं तो सवाल ये मन में आता है कि इन बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आता है? सर, गुस्से की वजह है क्या असल में बच्चों में? ठीक कहा आपने। सुनने में आता है आजकल के बच्चे वही हैं लेकिन बचपन पीछे रह गया है। और बचपना जो होता है, जो मासूमियत होती है, जो एक खामोशी भी होती है और एक बच्चे के चेहरे पर रौनक होती है, वो कई बार हमारे ही देश में, हमारे कल्चर में अब रिसर्च हो रही है, पता लग रहा है कि बच्चे कुंठा बेरज हो रहे हैं। कुंठा का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक जो दहशत है, जो आक्रामकता है, वो इस गुस्से के फॉर्म में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बाहर आ रही है। इसके पहलू जब स्कूल में दिखाई देती हैं, घर पे तो होता ही है, घर पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है, माता पिता के बीच में जो बात होती है या बड़ी जॉइंट लर्निंग होती है, बच्चे भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत अच्छा कदम है सीबीएसई का कि जब कदम स्कूल में रख रहा है बच्चा,
वो 7 घंटे वहाँ पर है, 7-8 घंटे ज़िंदगी तो वहीं बिताता है, और वो उस वातावरण में किसी का गुस्सा ग्रहण करके अपने आप को भी गुस्साजनक बना ले, ये एक सिस्टम के लिए, एक समाज के लिए बहुत बड़ी दहशत की बात होगी। लेकिन सवाल तो ये है कि बच्चों को या किशोरों को या छोटे छोटे बच्चों को, हम तो 3 साल के बच्चों को देखते हैं जो माँ बाप कहते हैं कि ये दांत में चलता है और इतना लाल पीला हो जाता है गुस्से से। यहाँ तक कि कहीं घूमने जाते हैं तो मॉल में लेट जाते हैं और जब तक उनको भी सामान न मिले और छूट नहीं मिले। कहीं पर एक बड़ा कारण जो एक बदलते हुए समाज में, बहुत रफ्तार बदल रही है समाज में, एक इकोनॉमिकल चेंज आ रहा है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज हो रही है और बातचीत और संचार घरों में बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में रहते हैं। कहीं पर जो आपसी कनेक्शन है, जो जज्बा है पारिवारिक माहौल का, वो सबसे बड़ा कारण पाया जा रहा है कि बच्चे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं काफ़ी समय से, जल्दी उम्र में, मतलब 3-4 साल का बच्चा भी अपने आप को खिलौनों में ज़िंदगी बिता रहा है और उसके अंदर जो भावना होती है जैसे वीडियो गेम्स मिलती है। अब देखिए इतने वायलेंट वीडियो गेम्स हैं, मैं कम से कम 2-3 बच्चे रोज़ देखता हूँ, एक क्लिनिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा दुख होता है। कई बार हमें भी पूछना होती है कि नहीं इतनी जल्दी इतनी उम्र में इतने वायलेंट गेम्स बच्चे कैसे देख रहे हैं। वो तो उस चीज़ को ही मजा समझेगा ना, उसके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन वो स्कूल में गुस्सा दिखाई दे रहा है। और ये बातों को थोड़ा सा गहराई से जैसा मैंने बताया कि पर्सनल, फैमिली और सोशल तीनों एंगल से देखना होगा। और अब स्कूल्स में एक स्किल डेवलपमेंट का माध्यम है, सिर्फ पढ़ा लिखा के लिए नहीं जाता बच्चा, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जाता है। तो ये बहुत अच्छा कदम होगा कि पहले उसको एक नाम तो दें, एंगर फ्री जोन चुना, और इस नाम से फिर शैली और स्किल भी डेवलप होगा। अनुराग जी, ऐसे कौन सी शिकायतें या कौन सी थेरेपीज या कौन सी लर्निंग पहुंची आप तक जिसके बाद इस तरह का कदम उठाना पड़ा कि एंगर फ्री जोन जो है स्कूल में बहुत जरूरी है? किन वजहों के बाद इस तरह का फैसला या फिर इस तरह का इनिशिएटिव सीरियसली ले रहा है? जी देखिए, 2 चीज़ें हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित की हैं। पहले तो समाज में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, जिस तरह की असंवेदनशीलता होती है, छोटी छोटी बात पर लोग लड़ रहे हैं। आप देखें कि थोड़ी देर के लिए अगर रेड लाइट हो जाती है और कोई गाड़ी नहीं बढ़ती तो पीछे से लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, लड़ करके मरने मारने पर उतार जाते हैं। Yes, we have a, this is a big treatment, so we'll have a discussion in between. So that the doctor sahab has used a very good line. I hope you all, it was a touching line. बचपन वही है और बचपना जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, क्या? और ये बच्चे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? Reason behind, kahin na kahin, we all have to take a responsibility as a parent, as a teachers. We are not capable of providing them that a healthy environment, which we were also having. See, we all have that bachpan. We grew up, now we into a teaching profession where we are planning or we are trying to give them an environment. But where, वो बचपना जो है वो कहाँ जा रहा है? और अगर वो कहीं जा रहा है तो who is responsible? Somewhere even we have to take the responsibility as a teacher. Yes? Secondly, the ma'am, principal ma'am जो है, उन्होंने एक चीज बोली, पहले जो teaching system था, it was all Gurukul, you know, it was written, you learn it, you write it, you score it, and you get it. But today, do you think it is possible? No. Today's child asks you why, where, how. And as a teacher, we should be, equipped with these questions. Why sun is stable? Why this, as a geography, why they rotate? Takkar kyun nahi hoti hai? Because my personal experience, my child is very small. He is in 2nd standard. They had a solar system. He got a project. So I brought a line, but I could not draw it in an orbit, goal karke. Ye takkar kyun nahi hote when they are moving? This was not a nonsense question where I said, what are you talking? Stop it. But if you think it critically, he's correct. So be there, why, how, where. ये question जो है, आजकल का बच्चा involved quality है. And as a teacher, as a parent, we should satisfy. और अगर वो satisfied नहीं होंगे, और अगर वो engage नहीं होंगे, so this is what the anger comes there. So इन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन बोली, बचपन तो वही था, बचपना जा रहा है. So आजकल का जो teaching है, it is not chalk and talk, or a lecture method will not work, especially at the school stage. Yes, in the higher section somewhere we can, but here in the primary section of the middle class, here we have to involve these
your teacher or I am not the resource person, the teacher is not the resource person in the class. All the students are resourceful person. They give you lot of resource. Only thing is how are you taking it and then satisfying them. That is very important. So here today's teaching is art integrated, what madam said. You have to give them practical example. The teaching, it is not the teaching has to take place in these four walls. Take them out. Take them to the playground. This is what they speak and their concepts you can teach. So it can be a visual art, it can be a performing art, but it has to be some art based where the child take interest. और जब interest आएगा तब बाकी सारी चीजों की जगह होती ही नहीं। जब आप interest lose करते हैं तब सारी चीजें जो by product है anger का that comes out. Okay, so I think it is very relevant, very good. So I'll ask sir, request sir to play it for the next half. कुछ बच्चों को लोग हरकत कर देते हैं, तो जिस तरह की असमंजस जिस तरह की चीजें बढ़ रही उसका एक बड़ा कारण गुस्सा एंगर। और अगर आदमी में लोगों में बच्चों में एंगर मैनेजमेंट है तो गुस्सा सबको आ सकता है क्योंकि सिचुएशन होती है, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट हमें आता है, गुस्सा आने से पहले अगर हम उसको रोकने की कला आती है और हम ये समझ सकते हैं किन सिचुएशंस में गुस्सा हो रहे हैं हम, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हम लोगों को प्रेरित की कि हम अपने बच्चों में, बच्चे देखिए छोटे छोटे बच्चे ये अपने माँ बाप को भी सिखाते हैं, टीचर को भी सिखाते हैं, सोसाइटी को भी सिखाते हैं। और बच्चों में बचपन से अगर हम अच्छी आदतों का विकास करेंगे, गुस्से से मुक्ति का हम प्रयास करेंगे, उनको जयफुल बनाएंगे, उनके फेस पे स्माइल करेंगे, तो सोसाइटी को नए लोग देंगे। तो मुख्य कारण तो यही था कि समाज में इस तरह की चीज़ों से हम कैसे बचें जिससे स्कूल हमारे जयफुल हो सके। और एक दूसरा प्रमुख कारण भी इन चीज़ों को लाने का कि आप देखें पिछले कुछ वर्षों में सीबीएसई लगातार प्रयास कर रहा है हमारी जो रूट लर्निंग है, रटने की प्रणाली है, वो कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे उसको बच्चे 5 विषयों को रट करके 100 में 100 ले लेते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनकी एथिक्स, उनकी वैल्यूज, उनके इमोशंस, उनकी जॉयफुलनेस बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। जरूरी नहीं कि 100% नंबर ले करके या डॉक्टर इंजीनियर बन करके भी समाज के अच्छा नागरिक थे। तो इसको देखते हुए हम लोग अब अपनी जो पुरानी प्रणाली है इसमें रट करके नंबर ले लें और एक पोजीशन ले लें लेकिन समाज को अच्छा नागरिक ना मिले, उसका एक उपाय निकाला है कि हम इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर सेट करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जब सेट करेंगे, जब क्लासरूम को जॉयफुल बनाएंगे, तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑटोमेटिकली एंगर को और गुस्से को कम करेगी। क्योंकि रटने वाली और नंबर लेने वाली शिक्षा में कई बार बच्चों को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, आत्महत्याएं होती है, बच्चों को तुलना की जाती है कि आपके नंबर ज्यादा है, आपके नंबर कम है, तुम्हारे 100 में 90 और उसके 100 में 100 है। ये चीजें बच्चों में एक खास तरह का गुस्सा उत्पन्न करती हैं, एंगर उत्पन्न करती हैं, डिप्रेशन ले आती हैं, किसी न किसी गलत दिशा में लेकर के जाते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, जॉयफुल लर्निंग पर शिफ्ट कर रहे हैं, स्किलिंग पर शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें ये एंगर फ्री जोन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं बच्चे और सोसाइटी बेटर सिटीजनशिप की तरफ जाए। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैम एक चीज जब पहले हम आपसे बात करें तब आपने कहा कि टीचर से बच्चों से मिले तो मुस्कुरा के मिले, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि प्राइमरी स्कूल में टीचर्स मुस्कुराने की स्थिति में होती है, इतनी ओवरलोडेड होती है, इतना काम होता है, एक्स्ट्रा चीजें जिम्मेदारी होती है, क्या उन जिम्मेदारियों के बीच वो माहौल टीचर्स के लिए अवेलेबल हो पाता है कि वो मुस्कुरा के बच्चों से बात कर पाए या वो माहौल उनको दे पाए? वो माहौल पहले उनको देने की भी क्या जरूरत है? मैं ये कहूँगी कि टीचर्स को कोई चॉइस ही नहीं है, उनको बच्चों को एक मुस्कुराहट के साथ ही मिलना है। मैं ये नहीं मानती कि टीचर्स ओवरवर्क है, क्योंकि टीचिंग अब जो है एक पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं रह गया। अगर हम देखें तो टीचर्स की सैलरीज की 7 पे कमीशन उनको मिलता है। एक शायद जो इंजीनियरिंग से पास आउट होकर बच्चा है उसको कम आज की तनख्वाह मिलती है, बट एक जो स्टार्टिंग टीचर है उसको ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है। तो एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अगर उसको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और क्लास में पढ़ाना है और ढंग से पढ़ाना है और बच्चों को होमवर्क भी देना है, एंगेज भी करना है, उसके पेरेंट्स से भी बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें उसके एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया का पार्ट है। तो पहले तो सब टीचर्स को ये समझना होगा कि हम ओवरवर्क नहीं हैं। दूसरा, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो एक 2.5 साल की या 3 साल की उम्र में हमारे पास आता है और वो 18 साल की उम्र में हमारे पास से जाता है।
जब वो निकलता है तो वो एक वोट देने के और गवर्नमेंट बनाने के क्षमता रखता है। तो जो बनाया हमने बनाया, जो बिगाड़ा हमने बिगाड़ा। तो अगर वो एक स्कूल में आ रहा है और टीचर के पास आ रहा है और एक पीयर ग्रुप के पास आ रहा है, घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं बट क्लास में 30, 35, 40 बच्चे होते हैं और फिर उसके बाद हजारों और बच्चे होते हैं। तो आपस में कैसे रहना है, कैसे प्यार से बांटना है, कैसे शेयरिंग करनी है, कैसे केयरिंग करनी है, कैसे जैसे सर ने बताया एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है और उसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब स्कूल के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। तो Here again the role of teacher is very important. Here, as we know, we always say as a teacher I too feel we are overloaded. ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है और उसके साथ भी स्माइलिंग फेस लेके जाना है. How it is possible? Isn't it? So the not impossible word itself says I am possible. Isn't it? तो आपके पास very clear instruction, no choice. Teachers have to do it. So choice है ही नहीं, because ये जो मैंने आपको बोला 21st century बच्चे, it is not, they are not going to take very easily everything. Till they are not satisfied, they'll keep on questioning, and we have to be very controlled with our manners, with our tongue, and of course with our action. So this is, again, ma'am says very clearly, teachers does not have any choice. घर में कुछ भी प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ गेट, स्कूल के गेट में, यू जस्ट सी देयर आर बैचेस. अगर 7 पीरियड है आपको एक दिन में, 6 पीरियड है, तो आप देख लीजिए 40 का अगर बैच है तो 40 into 6, दिस मेनी, कैसे 240 कैसे होता है, इतनी कैलकुलेशन तो ये भी अच्छी है. सो I believe every teacher in a day 60 to 70 children को तो फेस करता ही है. मैं बहुत कम बात कर रही हूँ, can be maximum. तो आपका एक्शन उन 70-80 बच्चों को हैमर करता है. तो आप ये मान के चलिए कोई चॉइस नहीं है. I agree that the principal ma'am says we agree to every point. You have question papers, you have corrections, you have this. You have to go for the curricular activities, you have to take them for the sports activity, everything is agreed. This is a part of your duty. With that, you have to carry that smile on your face and take it, yes, we will do it and this is how we have to do it. चाहे वो स्कूल की प्रिंसिपल है या वो टीचर्स हैं या अभिभावक है, सबका अपना अपना रोल है उस बच्चे के फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए और समाज के लिए ऐसा एक इंसान बनाने के लिए जो कि कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करे, कुछ क्रिएटिविटी स्प्रेड करे, कुछ बनाए. हम लोग क्या है, रिस्क टेकिंग बच्चों को नहीं सिखाते. हम बच्चों को ये ज्यादा बताते हैं कि क्या नहीं करना, क्या करना है वो कम बताते हैं. पर अब वो समय आ गया है कि हम बच्चों को ये बोले कि आपको जो करना है उसको क्रिएटिविटी के तौर पे उसको आप. Yes, again a very important point, isn't it? She like हम बच्चों को ये बताते हैं क्या नहीं करना है, लेकिन पॉजिटिवली कभी हमने ये बताया कि ये करो. Yes, अगर आपने वो किया है, वेरी गुड, वी हैव, आपने किया होगा डेफिनेटली, और अगर आपने ये किया है तो रिजल्ट आपके फेवर में होता है, राइट? सो दिस अल्टीमेटली सेज कि एंगर इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. वी हैव डिफरेंट सेट्स विद डिफरेंट एज ग्रुप एंड वी नो इट आवर ड्यूटी. लेकिन अगर हम बच्चों को ये बोले कि क्या करना है, ताकि हमारा जो गोल है जिसके लिए हम सुबह स्कूल में एंड कर रहे हैं, इट इज नॉट beating a child, it is not showing your anger, or it is not telling them कि I am very strict, you know, that is not our motive. इन सब का जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है जो क्लास में होता है, इसका अल्टीमेटली गोल एक ही होता है, that is a fruitful learning. If we want our child, अगर हम उसे गुस्सा कर रहे हैं या बोल रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा गोल है fruitful learning, and that can be achieved in the other ways, isn't it?
So any teacher would like to, put some points on this topic, as we have very experienced teachers sitting here and they would have come across many things in the classroom. So if you want to share, Sumi ma'am would like to say something. As we are dealing with the senior students, that means teenagers. Definitely, in that very age, the hormonal changes come in their body, and for the anger, the hormone which is responsible, that is the adrenaline. And that adrenaline, that is secreted by the adrenal gland. So this is coming from a bio teacher, please note it down. This is a hormone which is responsible for the anger in your body. So Not only for the anger, actually 3 situations are there. Okay. That means when somebody is ready for fight. Okay. That means during aggression. That means the anger. Flight. When something that we get in our favor, when we get the means maximum joy, we are happy at that time also. Okay? Means fight, flight and frightened. That means the condition when we get frightened with anything. In these 3 situations in our body, the adrenaline is secreted. And that very hormone is responsible for the anger. Until it persists in our body, we can't cool down. But thing is that biologically, what are the remedial methods? How we can cope? Because thing is that, okay, it is inborn. Thing is that very gland is present in our body, and infant shows his anger when he or she is only 2.5-month-old, and it maximum burst at the age of 2.5 years. Khilona, jodna, todna, feekna, at that time it is maximum. And in next, that means during the teenage, the student of the 8, 9, 10, in up to the 12th level, they got the maturity. They actually know how to handle the situation. But thing is that, जो अभी हमने देखा, ये नहीं करना है, but उस situation में क्या करना है? अब एक एग्जांपल से बताएंगे, बच्चे नहीं रहेंगे। I have to take the class जाना है। सबसे पहले सुनना नहीं है, ओके, अच्छा क्या हुआ था? अच्छा सुनते हैं बच्चा, go wash your face। क्योंकि वो हार्मोन जब तक मैक्सिमम में गुस्से में बच्चा भी कभी सही नहीं बताएगा, आप कभी शांत से सुन नहीं पाएंगे। मैं क्या करती हूँ, ओके, क्लास का माहौल डिस्टर्ब हुआ, आपको प्रोडक्टिविटी है 40 मिनट्स, आपको उतनी टाइम है, आपको अपना लेसन प्लान भी उसमें करना है, तो जो बच्चे किए बाहर भेज दिए, वॉश करके आए। एट दैट टाइम मैं एक कराती हूँ ध्यान योग, दैट इज द मेडिटेशन। ओके, बच्चे को मैं बिठाती हूँ जब भी, क्योंकि मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी वो सिचुएशन को हैंडल करना है। इन ऑल दैट सिचुएशन हमारे बॉडी में भी वो हार्मोन सीक्रेट होगा। वी आर जस्ट डूइंग एन नंबर ऑफ वर्क, वो करना है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। वी आर द नेशन बिल्डर। तो एट दैट टाइम जब बच्चे जाते हैं और ध्यान योग की स्थिति में 2 मिनट के लिए पूरी क्लास को बिठा रखा है, एट दैट टाइम जो भी हुआ एक कूल डाउन, और जब वो भी वॉक करके गए, थोड़ा सा फेस धोइए, डीप ब्रेथ करके आए, जो भी चीजें बताएंगे वो पूरी काम मिलेगा। आफ्टर दैट जब दोनों को सुन लेगा, क्योंकि बाकी कोई नहीं, नोबडी इज सी, एक होता है कि ओके हमारे जितने सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं सब देख रहा है, एट दैट टाइम एंग्री बच्चे का दिखेंगे क्या कर बढ़ता है, कोई कुछ हंस दिया, कोई कुछ बोल दिया, एट दैट टाइम तो ओके बाकी बैठे हुए हैं, आपको उन दोनों को ही सुनना है। तो जब हम ये सुनते हैं इन हाई सेक्शन, आई यूजुअली डू दैट मेडिटेशन, तो बच्चे बताते भी हैं, समझते भी हैं, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वाई यू आर कमिंग, बेटा गार्जियन को बुलाएंगे, अननेसेसरी उनको क्यों परेशान करना, आपकी किस गलती के लिए वो बात सुनते हैं। तो आप उस एज के बच्चों को अगर सही तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है, एट दैट टाइम उस एज के बच्चे अपनी बात ज्यादा कहते हैं ना, ब्रस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, उनका एग्रेशन, उनका रेडनेस आईज में, फेस में वो नजर आता है।
दैट वेरी मैनर, और देखते हैं कि कुछ जाता है, ओके बेटा रिलैक्स, आई विल लिसन यू आफ्टर दिस वेरी पीरियड। गल बचती है उनकी काउंसलिंग भी होती है, एक्चुअली इट इज नीडेड, क्योंकि अगर वो चीज का वही सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो कंटिन्यू करता है, और अगर नहीं किया जाता है आइदर बाय द सब्जेक्ट टीचर और बाय द क्लास टीचर, तो उसका लॉन्ग टर्म जो होता है, कभी क्लास में कुछ हो गया, ग्रुप बन गए, बच्चे लड़ लिए, इट एक्चुअली कम्स। थैंक यू मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन बाय अ बायो टीचर। इसका मतलब ये तो है कि कुछ ना कुछ बॉडी में होता है जो आपको गुस्सा दिला देता है। इट इज दैट हार्मोन्स, isn't it? So it is like what ma'am says, in the teenage, in the student group, when they are in the teen, it is very maximum, because they don't have that experience, or we can say they have not dealt with the real life situations. What is experience? This is what we call experience. Situations आपने face किया, उससे कुछ learn किया, so that you implement in the next situation. This is what the experience is called. So it is maximum in the students. Why? Because वो जो society में इतना open नहीं है. They are not dealing the problem very frequently. So it is maximum. So we are not responsible. It is the hormone which is responsible for making us angry. Right, ma'am? Thank you, ma'am. ये बढ़ के करिए, आप रिस्क लीजिए, हम आपके साथ हैं। कहीं अगर आप गलती करेंगे तो हम आपको बताएंगे। एक दायरे में जो बांध के हमने बच्चों को रखा है, उससे आगे निकलने के लिए उनको प्रेरित करना है, तभी वो एक नो एंगर जोन बनेगा। हमें बच्चों को एंगेज करना ही पड़ेगा। अब बताना कम है, उनको पढ़ाना कम है, पर उनसे करवाना ज्यादा। चलिए उम्मीद करते हैं जो कहा जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी हो। लेकिन डॉक्टर नागपाल, असल में जब एक जगह में पढ़ा था किसी मैगजीन में बच्चे और अभिभावक के रिश्ते में, तो एक बच्चा भगवान से कहता है कि देखिए भगवान, अगर अगला मुझे जन्म दे तो आप मुझे मोबाइल बनाना। तो ऐसा पूछा गया कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो बच्चे ने कहा देखिए मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहते हैं। सब बड़ी सेंटिमेंट के साथ, बड़ी भावनात्मक अपील है बच्चे की। तो माना जाए कि हम बीइंग अ पेरेंट उतना समय भी नहीं दे पा रहे बच्चे को जितना उसको जरूरत है। तो फिर एंगर फ्री जोन, मुस्कुरा के बात करना, सहिष्णुता सिखाना, दोस्ती सीखना, शेयरिंग केयरिंग सीखना, ये सीखेंगे कैसे? समय नहीं है असल में हमारे पास। एंगर फ्री जोन की जहाँ बात हो रही है, ये हमें सबको समझना चाहिए कि ये विषय केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे उसके भागीदार हैं, क्योंकि वो एक एंगर फ्री वातावरण में अपने आप को विकसित करें, ये ऑब्जेक्टिव है। और स्कूल एक वातावरण है। अभी जो चर्चा जिस तरफ जा रही है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चा एक सामाजिक प्रोडक्ट है, उसमें समाज में एक पहलू उसका स्कूलिंग है। और जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है कि मार्गदर्शकों की तो कमी है बच्चों में। हम जितने भी सर्वे देख चुके हैं, अभी तो भारत सरकार का बहुत बड़ा विषय है ये, जो अभी लैंसेट में पब्लिश हुआ है कि 10 से 15% बच्चे हमारे देश के मानसिक रोगी होने के शिकार बन रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ कंडक्ट है, यानी कि उसमें गुस्सा बहुत बड़ा पहलू है। ये बातें तो अक्सर घरों में या समाज में या मीडिया से सीखी जा रही हैं। उसका डिस्कशन, उसकी शेयरिंग जो होती है, चर्चा जो होती है, वो स्कूल में होती है, जब 40 जने 30 जने क्लास में मिलते हैं। आप देखिए इंटरनेट एडिक्शन की जहाँ बात आई थी, ये वर्ड एडिक्शन इंटरनेट से कहाँ से जुड़ा है? वसीनता कहते हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी एक बीमारी का नाम ले दिया है WHO ने, IAD और IGD के नाम से। ई एडिक्शन एज अ मेंटल इलनेस घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये बात सही है कि बच्चे तो पैदा होते ही एडिक्ट नहीं हो गए थे ना। उन्होंने किसी को देखा है, माँ बाप को देखा होगा, दोस्तों को देखा है, बड़ों को देखा है घर में, और वो लगा उनको कि हमारे लिए व्यस्त रहना इसी एंटरटेनमेंट में, इसी मनोरंजन में हमारे लिए अच्छा है। लेकिन क्या सीखा उन्होंने? क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल बचपन में कम होता है, बड़ों में थोड़ा ज़्यादा होता है। इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, यानी कि गुस्सा मैनेज नहीं कर पाए, जो वहाँ से सीखा, जो मीडिया से सीखा। अब देश के हालात भी थोड़े बहुत जो होते हैं, बच्चा रोज़ पढ़ रहा है, सुन रहा है। तो एंगर फ्री जोन के माध्यम से हमें लाइफ स्किल्स को वापस बच्चे के लाइफ साइकिल पे लाना होगा। एक विषय है, बुली फ्री जोन हो या एंगर फ्री जोन हो, वो तो एक मुद्दा है, एक एंट्री पॉइंट है जीवन कौशल शिक्षा का। अल्टीमेटली हमें वही बातें बच्चों से करनी होगी जो वैल्यूज में है, जैसे सर ने बताया, और जो हमारी लाइफ स्किल्स में है। उसका एक बड़ा मुद्दा आज के समाज में एंगर मैनेजमेंट है। Yes, a very important point again discussed. Mobile phone. So this is also a bimari. Take it. Not for it is not only for children. Even we are addicted. Confessing it, I won't say it is wrong. Yes, we are addicted. आज से याद कीजिए अपना बचपना,
हमारे पास था क्या? नहीं. So we were engaged. Due to our physical activities, we were burning our energy. But nowadays, children are more into mobiles and video games. आप मुझे एक भी वीडियो गेम बताइए जहाँ वो फाइट नहीं देखते, जहाँ वो they are not hitting. There is a superhero where he's hitting someone and getting through that fort, and so he's a small child. It's a blank cassette. So what are we teaching? It is getting recorded. What is he taking from the society is getting recorded. So he is taking this. This is a very best friend of everybody's. Not only child, not only parents, not only teachers. This is playing a very prominent role in the society. And it is an addiction. People are calling it as an addiction, and we have to get out of it. Especially in our children. Yes, 2 years back when we were in this corona period, this was an essential because this was the only way we can get connected to with the school and learning process to follow. But इसको क्या हमने learning process तक या ज्ञान लेने के तक ही सीमित रखा है? नहीं. आजकल आप देखेंगे छोटे बच्चे, पहले के जमाने में हमारे लिए पेरेंट्स खिलौने लेके आते थे. It must be, if it is a girl, it must be a doll house or a kitchen set. So we are practically doing something, and we have a group, we have a team. बहुत झगड़े भी होते थे, but it was a healthy. But nowadays, सबसे महंगा, children are having their personal mobiles, tabs, in which you have all video games, where you have a superhero. उसके हाथ में एक अच्छी सी बहुत रंग बिरंगी मशीन गन होती है, या he is dressed up in that gloves where he hits and he will. So he is taking all those things. So when he is coming with all those games, with the game shows that if you do this, you are a superhero. So वो क्यों नहीं कॉपी करेंगे? So this mobile phones are very dangerous. So this is what the doctor is requesting you. थोड़ा सा इसको साइड हटाइए. बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए. हर एक करिकुलम में अगर आप देखेंगे, पीटी जो हमारा गेम्स पीरियड है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम जब छोटे हमारे स्कूल के करिकुलम में वी यूज्ड टू हैव मास पीटी आल्सो. वेडनेसडे फर्स्ट पीरियड, मॉर्निंग असेंबली, ड्रम बीट पे विद द काउंटिंग, सो एक साथ मिलके वी डू दैट. सो एक्सरसाइज भी हुआ, टीम वर्क भी हुआ और मजा भी आया. We have burned our energy also, isn't it? So Vivek sir, as we have a PT teacher here, so how do you think, I just want to know your point, games and sports, how they play an important role in this anger management? Because recently we had a sports day with that experience. Please. पीटी वगैरह या गेम्स पीरियड जो पर्टिकुलरली बच्चों को मिलता है, स्कूल में क्या होता है कि मॉर्निंग से लेके जब तक बच्चे हैं स्कूल में, और में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चल रहा है. लेकिन उनके बीच में अगर जो पीटी पीरियड मिल रहा है या गेम्स पीरियड उनको मिल रहा है, उसमें क्या होता है, रिफ्रेश हो जाते हैं बच्चे. तो रिफ्रेशमेंट के बाद एनर्जी लेवल उनका हाई रहता है, वो रिफ्रेश फील करते हैं. तो उसके बाद जब वो क्लास में है या आपस में मिल करके वो पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकते हैं, और पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं. रेगुलर अगर 6 आवर्स सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई ही उनको करवा रहे हैं, या सिर्फ पढ़ाई का ही पीरियड है, उसमें बीच में उनको रिफ्रेश होने के लिए समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं और मन लगा के पढ़ नहीं पाते. और जो आउटकम्स होता है, जो आउटपुट होता है, जो भी टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, उसका आउटकम्स उनको कुछ नहीं मिल पाता. लेकिन अगर वहीं पे गेम्स और पीटी पीरियड अगर बीच में इंक्लूड हो जाए, तो बच्चे रिफ्रेश होके फिर से प्रॉपर एनर्जी के साथ वो पढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं, और उसका जो आउटकम्स होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है. और आपस में जो उनका तालमेल है, ये सबसे बड़ा चीज रहता है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके पीटी गेम्स वगैरह में मैंने देखा है, यहाँ पे भी अगर बच्चों को ले जा रहे हैं तो आप कोऑर्डिनेशन जो है बच्चों के बीच में गेम्स पीरियड में, जब वो कोई पर्टिकुलर गेम्स खेल रहे हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो पर्टिकुलर गेम्स में उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है
वो बहुत बढ़िया बनता है। तो उसी तरीके से वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टडी में। Very well said. The point which he said, coordination. Yes, sir. Actually, what he said is very true. आप देखेंगे 1 घंटे पहले बच्चा लड़ा, तुमसे बात नहीं करना है, तुमसे बात नहीं करना है, टीचर इंटरप्ट, ठीक है, you go and sit in that corner, you go and sit in that corner. This is what we generally do because we have that 40 minutes to teach also. Next period is games. Do you find these 2 children in 2 other different corners? Yeah, they are in the center. So this period is not only for the physical exercise, it is just to build a coordination. और अगर वो कोऑर्डिनेट होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग एक जगह जब आप मिलाते हैं, उसी को तो हम कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। अभी recently we had a sports day where we have children, even though same class children, we divided them into 4 houses and the competition has to go on. We saw them fighting, even the teachers fight. But ultimately, at the end of the day, it was a sportsman spirit, and we were together, and we were working for our annual sports meet. The sports is a very important role to play in the school curriculum because this is a practical example to teach students the teamwork, to coordinate. एक टॉपिक पे एक साथ बैठ के कैसे कुछ प्लान आउट किया जाए ताकि हम अपना जो हमारा जो गोल है उसको अचीव कर सकें. So sports teacher and the sports plays really a very prominent and very important role in building up the personality of the child. Yes, sir. क्योंकि हिंसक समाज में बच्चे का एक टीचर बन गया है, एक हिंसक समाज में तो बच्चे का अध्यापक बन गया है। टीवी भी बच्चा देख रहा है, वीडियो में देख रहा है, माँ बाप के बीच में जो अनबन होता है उसमें भी अनबन नहीं केवल हिंसा देख रहा है। कई बार बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूल के बच्चे आके बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स का क्यों नहीं इलाज होता है, मेरे फैमिली का क्यों नहीं इलाज होता है, मेरे को क्यों बोलते हैं कि तुम चलो काउंसलर से मिल लो या डॉक्टर से मिल लो। ये बहुत बड़ा सवाल है। बाल अधिकार का जमाना है, बाल एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है, एक बाल अधिकार चाइल्ड राइट्स का जमाना है। बच्चे आज के नहीं, हम जानते हैं, हम देख चुके हैं, हम लोग सब एक ही दिशा में सोच रहे हैं कि चाइल्ड राइट्स भी तो ये विषय उठाएगा कल, जो एसर्शन होता है, एसर्टिवनेस होता है बच्चे का। मुझे कौन सा समाज दे रहे हो, मुझे कैसा समाज दे रहे हो कि मैं अपने आप से ही घबरा जाऊँ, तो वो और को क्या खुश रखेगा बच्चा। अनुराग जी, असल में किसी को फोन करने पे, फोन ना मिलने पे फोन का फेंक देना, जैसा आपने भी बोला कि गाड़ी चला रहे हो, साइड ना मिले तो हॉर्न बजाना, गालियां देना, चिल्लाना, क्या हमारे आम जीवन में इतना सामान्य हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता। और कई बार बच्चे भी कहते हैं ऐसा कूल है, शायद होता ही होगा। तो ये प्रवृत्ति असल में क्या ये भी गुस्से की बड़ी वजह है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि गुस्सा जो है ये व्यक्तिगत होता है और गुस्सा किसी बाहरी कारण से नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसका कारण दूसरों में ढूंढता है। एक जूनियर ऑफिसर गुस्सा करता है अपने से जूनियर स्टाफ पे, तो उसका उत्तर ये ढूंढता है कि इसने काम समय पर नहीं किया। फादर मदर बच्चे पर गुस्सा करते हैं तो उसका कारण ये ढूंढते हैं बच्चे ने ठीक से पढ़ाई नहीं की, ठीक है ना। समाज में जो लोग चल रहे हैं, अगर किसी पर गुस्सा करते हैं तो उनको लगता है कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन इसको थोड़ा उल्टे तरीके से अगर हम सोचें तो गुस्से का निहायत करना व्यक्तिगत होता है। बेसिकली जब इमोशनली बैलेंस नहीं होते, जब हंगर में होते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब मेंटली हम मजबूत नहीं होते, तब हमारे को गुस्सा आता, हम नियंत्रण नहीं कर पाते और हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हमारा डिप्रेशन है, हम दूसरों पर निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गुस्सा नहीं करेगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो गुस्सा नहीं करेगा। हमें एक व्यक्तिगत उदाहरण आपको, तो हम बॉस पे गुस्सा नहीं करते। अब देखिए, आप अपने जूनियर पे गुस्सा हमेशा करते हैं, लेकिन आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं करते। आपने कभी देखा है कोई टीचर किसी प्रिंसिपल पे गुस्सा करे, कोई जूनियर ऑफिसर अपने बॉस पे गुस्सा करे? इट मींस सिचुएशनल है। उसको मालूम है कि किस पर गुस्सा करने से असर पड़ेगा, किस पर नहीं पड़ेगा। तो गुस्सा करना एक व्यक्तिगत इमोशन है जिससे आदमी सामने वाले पर एक दबाव डालता है, डोमिनेट करता है कि मेरी बात वो मान जाए। गुस्सा करने से उसको लगता है कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मेरी बात जल्दी से ये मान लेंगे और जो मैं चाह रहा हूँ मिल जाए। अच्छा, कई बार इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी मिल जाता है। आप बच्चे पर गुस्सा करते डांटते हैं कि पढ़ाई करो, हो सकता है बच्चा 1-2 घंटे पढ़े। अपने जूनियर पर आप गुस्सा करते हैं, हो सकता है आपकी फाइल 1 घंटे में जल्दी निपट जाए। अपने टीचर पर आप गुस्सा करते हैं, हो सकता है टीचर उसने अच्छी क्लास में। लेकिन इसका लॉन्ग में बहुत नुकसान होता है
क्योंकि बच्चा फिर उसकी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे कि जब गुस्से की सिचुएशन होगी तो हम काम कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है जो निहायत व्यक्तिगत है और इसे कहीं न कहीं रोकना ही चाहिए क्योंकि इसका यूज नुकसान ठीक है। तो गुस्से को दूर करने से पहले हमें गुस्से को समझने की जरूरत है। लेकिन मैम एक चीज मैं समझना चाह रहा था, आपने कहते समय बच्चों को मार्गदर्शक की बहुत जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है बच्चों के पास तो मार्गदर्शकों की भरमार है। हम बोलते हैं देखिए पढ़िए अच्छा, आप म्यूजिक अच्छा करिए, आप डांस अच्छा करिए, आप खेलिए अच्छा, इतना प्रेशर होता है कि वो प्रेशर कई बार उनकी सीमाओं को, उनकी क्षमताओं को भी क्रॉस कर जाता है और फिर अगर वो नहीं हो पाती ऐसी चीजें तो फिर गुस्सा हो जाता है। कई बार अपने बच्चों की उपलब्धियों को हम मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पे बड़ी शान के साथ अपलोड करते हैं, तो ये भी सारी वजह आप बच्चों में देख पाती हैं मैम कि गुस्सा कहीं ना कहीं यहाँ से भी बचता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली कंपटीशन जो है वो पेरेंट्स के बीच में होता है, वो कभी भी बच्चों के बीच में उतना नहीं होता। वो शुरू से जो माँ बाप हैं, अगर जब बच्चा 3 साल का होता है या उससे भी छोटा होता है तभी वो कंपटीशन शुरू हो जाता है। पार्क में खेलने जाते हैं जब बच्चे, तो इस बात से भी कंपटीशन होता है कि वो बच्चा शायद ज्यादा जल्दी चलना सीख गया या मेरा बच्चा अभी बोलना नहीं सीखा। ये नहीं जानते पेरेंट्स की जो इंडिविजुअल माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, वो सब अलग अलग होते हैं। Yes. So here you can see mom is explaining it very clearly. गुस्सा is not a solution. नहीं तो क्या है, वो हमें ग्रांटेड ले लेता है, कुछ भी करो गुस्सा करेंगे और जब गुस्सा करेंगे तब काम कर लेंगे। This is a very wrong information. It is a very wrong thing which we are putting to the child, isn't it? So yes, it is required. जरूरी भी है, लेकिन किस हद तक जरूरी है? This is what very important. एक सेंटेंस बचपन तो वही है, बचपना चला गया। It's very important and very touchy sentence between teacher. हमें देखना है क्योंकि बच्चा जब हमारे पास आ रहा है 2.5 साल का आ रहा है, जहां हम उसको बोल रहे हैं कि वो ब्लैंक स्लेट है, और जब यहाँ से पास आउट होता है ऑलमोस्ट 16-17, 1 साल के बाद उसको गवर्नमेंट भी राइट देती है टू वोट, सरकार इतनी समझ हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का, एक स्कूल का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है टू बिल्ड अप अ चाइल्ड इनटू एंड making the school a anger free zone so that he is expressive, he comes and talk to you, he find a space for his problem. This is what is required with the anger free school, so that tomorrow again he gets up, like every cloud have a silver lining. Tomorrow he waits for the sunshine and he says, yes, today again I am going to school. The classroom learning has to be very joyful so that he is interested, he take a creativity, and the learning should be from their side. It is not chalk and talk, you talk and he is listening. No, it is 21st century where we are talking about art integration, we are talking about experiments, we are talking about creative thinking, isn't it? Situations, हमारे टेक्स्ट बुक में हॉट क्वेश्चन करके है, it is nothing but a creative thinking. We are giving them a situation कि ऐसा होगा तो what will be you doing? Think and write. It is open-ended. Your views can be different, my views can be different, but here putting your views is more important. So I believe this is what she taught. I mean to say, Anurag sir or ma'am or the doctors are what they spoke is very relevant, and this generally we face in everyday life. So here we will have a small tea break, and 11:30 will come back.